उस एलियन साइट पे जो तुम्हें मिला है और जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो सब गलत है। Project 22 contained artifacts from an extraterrestrial civilization. After the alien crash, both recovered 2 mystic gems and a graviton-emitting hammer. तुमको ये 3D ग्लासेस लगते हैं? तुमको पता है ये CT स्कैन, MRI, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है, सबका काम ये करता है। दिस इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन असिस्टेंस। कल को हर कोई इसको यूज करेगा। वे पता है क्या मेरे को क्या लगता है कि आपको जो है NSO में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लाइक नो ऑफेंस बट पिछले इंसर्शन के बाद ना कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। इट्स लाइक हीलिंग हो नहीं रही सही से। एंड वैसे भी बायोटेक का ज़माना गया है यार। आपका जो है इट्स मोर ऑफ एन AI, मोर ऑफ मशीन लर्निंग। ये दिस इज व्हाट द फ्यूचर इज। एंड NSO शक्ति मिसाइल, सीरियसली आपके काम का क्रेडिट नहीं दिया उन्होंने, बट रिमेंबर दिस कि आपके AI की वजह से ही दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड मिसाइल बन रहा है जो कि अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। यू आर डूइंग ग्रेट इन AI। व्हाई बायोटेक? क्यों हम इंसानों को तेज बनाने के पीछे लगे? इट्स लाइक व्हाई नॉट मेक एन एक्सोस्केलेटन, लाइक a war armor, battle armor, war machine sort of thing. कितना मजा आएगा? Trust me when I say this, AI is the future. It's the next big thing. Trust me, AI, it is Shakti missile. It is the next big thing. नेक्स्ट बिग थिंग तो दुनिया के लिए। हम इतनी मेहनत करते हैं ना चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, पर इसका क्या? हर कोई चाहता है कि नेक्स्ट स्पोर्ट्स कार बनाए, पर कोई कभी खुद को इतना तेज नहीं बनाना चाहता। अब हीलिंग कैसी है? अब ओके, फाइनल ड्रिल। डोसेज के इंसर्शन के बाद सबसे पहले तुम्हारे न्यूरल इंपल्सेस बहुत तेज़ी से फायर होंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और तुम्हारी हीलिंग बहुत ज़्यादा हैम्प अप हो जाएंगी। और हर डोसेज की तरह इसका भी इफेक्ट सिर्फ 120 डेज तक ही रहेगा रब की। तो स्टार्टिंग में इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा एड्रेनलिन रश होगा, तो थोड़ा संभाल लेना तुम। Okay, let's do it. Feels good actually, थोड़ा सा मेरे को एनर्जेटिक। ये क्या मिला तुमने से? It's like a new force, speed force. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message
message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Some say love is a burning thing, that it makes the fire ring. Hello. But I know love Is this Arushi said that? fading. Hey Arushi, this is Sohail, Shabaz's brother. Bodhu's brother. Listen, I just wanted to inform something to you. I know that you are the one who's working dedicatedly on the PR of Shakti Missile, but I just want to let you know. Oh, hi! Bodhu! Hello. Congratulations! Finally, Shakti Missile project is going to happen. All these years of hard work. Congratulations. It's finally been paid off. Shakti missile, artificial intelligence. It's nothing when you have the power of gods. Human evolution, it's primitive. हम कितना कुछ बन सकते हैं successfully. Don't tell me you're talking about the alien crash site. It's not even real. मुझे भी यही लगता था. But now I have the knowledge. Inside. पुलिस से पहले वहाँ पे पहुँच गया, ब्लड सैंपल भी ले लिया, और साथ में ये भी मिला. What? स्पेस टाइम बेंडिंग जंप. बस एक ही चीज़ है जो मैं समझ नहीं पाया. क्या? हैमर. उस एलियन डेड बॉडी के पास एक हैमर मिला मुझे, जिसको मैं उठा नहीं पाया. शायद एनकोडेड था किसी तरह का ग्रेविटॉन एमिटर. ऐसी चीज़ जो क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल्स को चेंज कर सकती है, बीच हवा में अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज कर सकती है. उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ उस एलियन के जेनेटिक कोड से ही वो एक्टिवेट होगा. Bodhu, you know it's crazy, right? ये बात किसी को समझ नहीं आएगी, पर अगर तुम वो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा दो, सब तक पहुंचा दो ये इन्फॉर्मेशन, तो शायद मैं उन्हें माफ़ कर सकता हूँ. तुम ये स्टोन्स प्लीज उन फाइल्स के साथ रख देना. वहाँ पे एक और ऐसा स्टोन रखा होगा. तब तक मैं एक ज़रूरी काम ख़त्म करके आता हूँ.
मेरा सादा है, बुज़दिलों का छोड़ा बोझ मैंने लादा है। लगता आसान है ये पर खेल थोड़ा ज़्यादा है, जहाँ मेरी मौत लिखी लड़ना ही बारा है। किसने बोला डरता रहना तो मर्यादा है, बाला बनाता बच्चा गिरता हो रहा है। मेरी तैयारी में मैंने साधा है, कर्मों का फल लेकिन मीठा ये आधा है। सांस लेना कोई इनाम है मेरे लिए, बेइज्जती का दाम है मेरे लिए। डर डर के जीना आम है मेरे लिए, इंसानियत बदनाम है मेरे लिए। कब से मेरी आवाज दबा के रखी, लेकिन मेरा इनकलाब मिटेगा नहीं। तोड़े जो मैंने साज सजा के रखे, लेकिन मेरा गीत बजेगा यही। हाँ, क्यों मेरा दिल इतना धड़के, इतना जैसे मीलों ये दौड़ा हो। क्यों मेरा हर सपना डरावना, सोने न दे मुझको, सोने न दे मुझको। It starts with one. Hello, Surveil. How can I help you? Please run full body diagnostics. Initiating. What are they? Sure. Project 22 contained artifacts from an extraterrestrial civilization. After the alien crash, Bodhu recovered 2 mystic gems and a graviton-emitting hammer. The gems look like some sort of artifact of an advanced alien species, as guardians as documented by Bodhu, and it extends its semi-consciousness up till the 11th dimension. In raw form, the gem taps into the consciousness of the user, allowing him to visualize the 3 perceivable dimensions by humans, hence allowing the user to use the gem to bend all the 3 dimensions of space-time by creating spontaneous macroscopic wormholes, thus allowing teleportation. Teleportation? Full body diagnostics done. Schwann cells degenerated. Reflexes amped up to 3 times the speed of an average Homo sapien. Neural network 85% similar to a typical eukaryote. So, I just need to teleport and get Bodhu to a safe zone and make him understand. It's not space war that'll help you make everything okay. Then what? Honestly, I just don't know how to stop him. Time. Time? You could travel through time and stop him before these events even happen in the first place. What rubbish. Time travel. The ability of the human mind to rationalize independent events into a linear structure is what keeps them from perceiving the reality. Is it really possible to go back and just stop everything? The stability of the wormhole is the main concern, as it could collapse in itself, leaving the user stuck in the past. However, predictive analysis confirms that the wormhole can be kept stable for 138 seconds, which roughly translates to 2 minutes and 18 seconds. Should I activate a safety pullback protocol? Do whatever it takes. Okay, I need you to get the coordinates straight. Transpose your transmission frequency by a factor of 3. There is already a copy of this in the past and I don't want the transmission frequency to interfere with each other. Your time jump is being initiated, preparing 11-dimensional coordinates for the jump. No. Just give me 4. The exact moment when Bodhu's project got rejected. Preparing coordinates. Sounds good. Activate emergency countdown 10 seconds before you bring me back. Preset updated. However, as a safety measure, you need to be cautious about the repercussions of time travel and its paradoxes, including the grandfather paradox, or even worse, What worse? the temporal paradox. Time jump successful. You're 14 hours back in time. Countdown initiated on screen.
जान मार तुम्हें। Safety pullback activating in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में जहां पे हम बात करते हैं ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताता है। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना करें। चलिए मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं 14 अप्रैल की। जी हाँ, कल उड़ीसा से सटे अब्दुल कलाम आइलैंड और व्हीलर आइलैंड पे शक्ति मिसाइल की टेस्टिंग है। जी हाँ, और शक्ति मिसाइल से जुड़े इस प्रोजेक्ट की एक खास बात जो कि ऑफिशियल्स ने हम सब से छुपाई है वो ये है कि 4 महीने से उस प्रोजेक्ट से जुड़े 2 लोग लापता हैं। जी हाँ, 4 महीने से और उनकी अब तक कोई खबर नहीं है। वो 2 लोग जो हैं, एक हैं बायोटेक्निकल साइंटिस्ट अरविंद और दूसरे चीफ इंटेलिजेंस डिजाइनर शाहबाज। जी हाँ, शाहबाज जिनका नाम आपने पहले काफी सुना है। इन्होंने बचपन से ही साइंस की फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया था। शाहबाज की जिंदगी से जुड़ी एक खास बात यह है कि उनके जुड़वा भाई में एलियन डीएनए इंजेक्ट किया गया था और वो भी लापता है। क्या नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ हमसे कोई बात छुपा रहा है? क्या इस प्रोजेक्ट की आड़ में बायो वेपन्स की इन्वेंशन की जा रही है मानवता के सर्वनाश के लिए? अगर ऐसा है तो क्या नेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सोचने की बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं। बच्चों को ड्रग्स देता तू? Welcome, Suhail. Hey, can you please see if he's safe? Detected. Bodhu traveled forward in time and reached here. His coordinates are the same as the Shakti missile crash site. Body starting to decompose. Just play the news. Just play the news. Searching online. Good morning, viewers. This is News Bunker, bunking your mornings with the latest of gossips from around the world. It's going to be one hell of a morning. Speaking of hell, our first reveal this morning, a report from Bhadrak, Orissa, where the locals reported of a blazing trail of fire across the early morning sky, which actually turned out to be the rather infamous MiG-28 jet aircraft carrying out one of the first runs in a series of test flights from the Abdul Kalam Island, aka Wheeler Island, to test the air-to-air defense capabilities of the Shakti missile. Our resources have also revealed that one of the crash victims was indeed Shahbaz Ahmed, the chief scientist behind the Shakti missile, who, as it had seemed, disappeared from the face of Earth 4 months ago,
under mysterious circumstances and was presumed dead. Although the reason behind the crash is still being speculated, we are yet to receive any official statement from the authorities. Although his being on flight does raise several questions, one can only speculate how much the death of one of the most brilliant men ever will affect our scientific progress. I'd like to ask how this country's treatment of brilliant scientists have been so casual and neglected, and if his demise will bring about any change to the situation. It's high time to raise to the occasion. We'll be returning after a short break to cover up the Shakti crisis. While you good folks, don't leave your comfy cushions and stay tuned for more kick-ass mornings. बुधू हमें सब रोकना होगा यार। बहुत कुछ खराब हो रहा है। बहुत लोग मर गए। मैं और तुम मिल के रोक सकते हैं सारी चीज़ों को। तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ से नहीं, तुम्हारे दिमाग से। प्लीज़ मैं अकेले मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बोलो। मैंने कोशिश की, अब शायद मैं कोशिश करूंगा, पर मैं अकेले कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ तुम्हें, अपने दोस्तों को। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता बोलो। पर अगर हम सब लोग साथ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मुझे वो सीरम तुम पे कभी यूज ही नहीं करना चाहिए था। तुम उसके काबिल ही नहीं हो। हाँ, वैसे अगर तुम अकेले ये सब नहीं रोक सकते तो फिर तुम जिंदा क्यों हो? Oh, take me back to the start. I'm going back to the start. I'm going back to the start.
tell me, where's the cube? I don't know! Wait! Just leave him. I have the cube. I know you have figured out something. Stole my tech, hacked into my system. You're a really talented man. You know, together we could have done a lot to save this world. Eliminated poverty, saved our soldiers.